Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis which I'll be covering from the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial would be discussed in this session. So let's get started with the topic first. Today is 12th of August. The first topic is PM pitches to make brand India strong. Second, center to soon free up untapped space in the SEZ, that is Special Economic Zones. Third, central disinvestment plan for public sector firms. The second last, that ISRO to launch EOS 3, and the last is an urban job safety net. So this is an editorial from the Hindu. Apart from the news discussion, at the end of this video, there would be some MCQ based questions. These questions are based on current affairs that will help you in the upcoming prelims examination, right? And a small announcement that we are organizing All India Open Mock Test that is scheduled for 15th of August. You can register yourself. I have provided a dedicated link in the description section. From the description section, you can register yourself and you can participate. The 10 student will get the free assistance on main writing, answer writing guidance, and 50 student will get discount on the mains, basically mains All India test packages. So do avail the benefits, and the best performer would definitely getting these benefits. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, do not forget to give a thumbs up. Starting the session with the first news, that is PM pitches to make brand India strong. So this is something which is important for your general studies paper 2, government policies and intervention for the development of various sector. So Prime Minister was recently addressing CII industries, the meeting that was being held. He was handling the basically the Confederation for Indian Industries conference, and he pitches for something. We'll discuss what are the details coming from this news. So the Prime Minister has recently addressed the annual session of CII, that is Confederation of Indian Industries. So इस एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हाईलाइट किया है. फर्स्ट, ही सेड दैट वी नीड टू फोकस अपॉन इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट कोविड-19. दिस इज समथिंग विच इज द foremost priority of the government, and to pick up the pace in the domestic industry, we need to take the advantages of the environment that have been created for the development. We have seen in many quarters from 2020 onwards, for the entire year, the economy was not performing well. Every sector was deteriorating. But during this month, from July onwards, we have seen that some positive sentiments in the economy can have seen. So these opportunity need to be used. This is what the Prime Minister has been focusing upon. That अभी इंडस्ट्री को ज़रूरत है कि वो इस तरह के जो environment create हो रही है इकोनॉमी में उसके पूरी advantage ले पाए. So this is what the Prime Minister was pitching for. And talking about the annual session of Confederation of Indian Industries, जहाँ पे बहुत ही important इंडिया के businessmen that include Tata Son chairman, Kotak Mahindra Bank MD, and CEO of Kotak, he's Uday Kotak. Larsen and Turbo के जो MD और CEO है उन्होंने अटेंड किया. उसके अलावे भारत फौज के जो CMD है, these people were the main participants that were in the part of the CIA conference, right? So यहाँ पे बात की गई है प्राइवेटाइजेशंस को बढ़ाने के लिए. बेसिकली द पार्टनरशिप विद प्राइवेटाइजेशन नीड टू बी मोर. द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एडेड कि जो सेल्फ रिलायंस इंडिया है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली इन R&D, राइट. सो जो हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट है उसमें जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैनफोल्ड दिस इंक्रीज वुड हेल्प द गवर्नमेंट टू गेट मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी. और सिर्फ गवर्नमेंट अकेले इस पे काम नहीं कर सकती है. द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ टू कम अप इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Now the Prime Minister said that this is our aim to make brand India stronger, right? So Prime Minister is of the notion कि जो इंडिया जो मैन्युफैक्चरिंग हब है या फिर जो भी चीज़ मेक इन इंडिया है उसको एक ब्रांड की तरह प्रमोट किया जाए ग्लोबली. एंड वी नीड टू स्ट्रेंथन आवर पार्टनरशिप विद द प्राइवेट प्लेयर्स एंड द गवर्नमेंट एंटिटीज़. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है. डेफिनेटली मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट मेक इन इंडिया जिसमें उतनी ज़्यादा सक्सेस हुई नहीं थी गवर्नमेंट को, उसके बाद गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत अभियान, राइट, आत्मनिर्भर भारत अभियान, दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दिस इज अ टाइम व्हेन एवरीथिंग that was considered important, जो फॉरेन
गुड्स हैं वो इम्पोर्टेड समझे जाते थे. दिस वॉज द साइकोलॉजी ऑफ द इंडियन कंज्यूमर दैट दे फाइंड कि फॉरेन गुड्स आर गुड. बट द साइकोलॉजी हैज चेंज इन द रिसेंट टाइम. नाउ people look forward for make in India products, right? And speaking to the same session, जो भारत फौज के CMD हैं बाबा कयानी, he has suggested 5 prolonged approach to include and to change the psychology of Indian mindset and increase the productivity of make in India initiatives, and even to increase the productivity under Atmanirbhar Bharat initiative. So he called for augmenting the design and innovation capacity. This is something which is very important for Indian industries. Second is establishing end-to-end value chain. Value chain को establish करना, एक पूरी cycle बनाना is very important. Participations in the global agenda for climate actions. I have also discussed with you yesterday कि climate change के जो commitments हैं हर एक country के intended national determined contribution है under the Paris climate change, उसको achieve करना would be again a target. Reducing the cost of doing business, right, to make company more profitable. And the last is focusing upon the indigenous research, innovation in IPR, that is intellectual property rights. Now, Tata Sons के चेयरमैन ने कुछ इंपॉर्टेंट बातों को रखा. They focuses upon 5 trillion economy. Actually, गवर्नमेंट ने टारगेट की थी 5 trillion economy by 2025. But because of COVID-19, the experts are of the opinion, the industries, the businessmen are of the opinion that we can chase this target by 2031, right? So it will take more 6 years to achieve the target. But at the same time, we need to enhance the technological capacity in electronic and 5G. This is what the Tata Sons chairman has said. And he said that developing a skilling ecosystem is something which is very important. Creating a protocol and partnership with the country's cooperation would be essential to build a healthy India, sustainable India that could have a $5 trillion economy, right? So technological boost and technological upgradation is the need of the hour. And these opinions are coming from the businessmen, the expert, the stakeholders, and even government have this notion that technology can definitely play a significant role in overall development of the Indian economy. Now coming to the other news, center to soon free up untapped space in SEZ, that is Special Economic Zone. So this is something which is important for your General Studies paper 2, inclusive growth and issues arising from it. So in the latest decision, central government ने decide किया है there would be soon free up the unused build up area, ऐसे area जो कि पूरी तरह से build up नहीं है और जो land allocations की गई है वो unnecessarily occupied है, उस area को utilize करेगी और इसके पूरी worth जो बताएगी जो total land withholding stations में है, this is like 30,000 crore rupees and this is an idle land, right? That is supposed to be used. जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर जो लैंड है जिनकी पूरी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं की गई है, कई ऐसे लैंड है स्पेशल इकोनॉमिक जोन एरियाज में जो अभी भी खाली हैं, राइट? तो इनको यूटिलाइज करने की बात की है गवर्नमेंट ने फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज. यूटिलाइजिंग SEZ की जितनी भी लैंड्स होगी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आती है, सो द मूव टू फ्री अप अनयूटिलाइज्ड लैंड पार्सल इज लाइकली टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय अगस्त 10. तो गवर्नमेंट ने इसको डिमार्केट किया है कौन कौन से ऐसे एरियाज है दैट नीड टू बी लुक अपॉन, and government is trying to focuses upon that these areas should be optimally used so that government can generate revenue, and at the same time these land would benefit number of business enterprises to make a utilization of that particular land. So part of the simpler regular regime that government is rising for SEG, and these account for 30% of India's export, right? So this is something which is again very important segment, and there's a lot space within the SEG. जब मैंने आपको बताया जितने भी जो पार्सल लैंड्स हैं, जो लैंड के पॉकेट्स हैं, उनको यूटिलाइज की जाएगी, and these include that is free, that area is free, that is no more utilized, that would be completely utilized by the another company or enterprises. So government is going to ease up the process for denotification of the land, and if once denotified, any other company can utilize that particular land. Now import monitoring cell भी बनाई गई है. गवर्नमेंट ने कहा कि उन्होंने रिसेंटली एक import monitoring cell बनाई लास्ट मंथ. This will track the spurts in the item inflow, and what is basically हर एक मिनिस्ट्री कंसर्न होती है हर एक चीज को इम्पोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए. So the concerned ministry would also be looking forward with an import monitoring cell so that
we can promote the export from our country, right? And the ministry has also kicked off restructuring of exercise. जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड है उसमें भी उसकी जो पूरी हायरार्की है उसको चेंज की जाएगी, उसको पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा सो दैट वी कैन गेट optimization of the DCFI, basically the Director General of Foreign Trade, we call it DGFT, right? Director General of Foreign Trade is again an important office in Government of India in terms of promoting the exporting the items and promoting the foreign trade. तो इस ऑफिस के बारे में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लें. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. Now the other news, center disinvestment plan for public sector firms. Again, this is something which is important for your general studies paper 2. Government policies and intervention for the development of various sectors. So what government has decided, a disinvestment plan is coming up with many public sector firms. So the central government has decided कि वो सेल ऑफ करेंगे जो रेसिडुअल स्टेक्स है गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर्स पे जो कि काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं उन पे. दैट इंक्लूड पारादीप फास्फेट्स, Hindustan Zinc and Balco, right? So these three important firms where government already had some stake. Now what they will be doing, they would be selling off their stake and they would be making money so that money can be invested in any other sectors. So according to the Department of Investment of Public Asset Management, जिसको DIPAM के नाम से भी जाना जाता है, the intention is to exit completely subject to the court ruling. तो कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी थी रिगार्डिंग द पब्लिक सेक्टर्स, सो दे वुड बी अकॉर्डिंगली वर्किंग ऑन दैट एंड दीज थिंग्स वुड बेनिफिट बेसिकली द गवर्नमेंट टू जनरेट मोर एंड मोर मनी. नाउ गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें, गवर्नमेंट शोज दैट 49% ऑफ द स्टेक इन एल्युमिनियम प्रोड्यूसर्स बाल्को एंड 29% इन द हिंदुस्तान जिंक. तो ये पूरी गवर्नमेंट की अभी की प्रेजेंट स्टेक है. With later sell 2016 में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी थी इसके ऊपर. नाउ दे वुड बी कमिंग अप विद सेलिंग ऑफ ऑल द स्टेक्स. बेसिकली जो मेजॉरिटी होल्डिंग है वो गवर्नमेंट सेल करेगी. एंड बोथ द फर्म स्टेटिंग हाई प्रॉफिटेबल आफ्टर द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स. जहाँ पे देखा गया कि प्राइवेट प्लेयर को हैंड ओवर करने के बाद उसमें उसके एक्सचेकर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी नोट की गई. एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वेर एक्सपेक्टेड to inverted soon for the sale of Container Corporation of India, जिसको कॉनकोर के नाम से भी जाना जाता है. So government is trying to look for these PSUs as well, so that they can optimize the working of this PSUs or the public sector, basically enterprises, और जो profit sharing है गवर्नमेंट की वो भी यूटिलाइज हो पाएगी. Now government intended for privatizations. गवर्नमेंट की जो अपनी इंटेंशन है, गवर्नमेंट ने पहले भी अनाउंस किया है, they would be privatizing Air India, BPCL, that is Bharat Petroleum Limited, right? Shipping Corporation of India, BEML, Pawan Hans and Neelachal Ispat Nigam Limited. So these are the important PSUs that government is looking forward for the privatization. So they are looking for more assent from DIPAM, the Department of Investment and Public Asset Management. Once they approve this, the government would be selling off their stake to the private enterprises. And these transactions were done in terms of DIPAM have got the sufficient interest for the bidders and now completing the second stage of due diligence of financial bidding, right? So there are some procedures that had to be followed before any PSU are get for the bid, and once these norms and procedures are followed, government can go ahead with the disinvesting these companies. Hope things are clear to you. Now ISRO to launch EOS 3. This is something which is again very important, and this is important for your general studies paper 3. Achievement of India in science and technology, indigenization of technology, development of new technology. So Indian Space of Research Organization ISRO जो है उन्होंने decide किया कि they would be launching EOS 3, that is Earth Observation Satellite, जिसको GL3 Mark 3 से use की जाएगी, and this would be done today, that is 12th of August, Sriharikota se, right? And the mission of the agency has resumed the activity of the gap of 4 months basically, क्योंकि COVID-19 के बाद अब ये चीज़ें शुरू हुई है. But there's a disappointment with this news that we are coming in the morning itself that the flight, basically the launch took place, but it was not successful. So it is disappointing for India, but definitely it's not a failure. Every failure is a moment to learn. So I will just tell you what officially information we have received. That ISRO in its Twitter handle has said initially at the
at 5 they have said that GLF-10 lifts successfully from Satish Dhawan Space Centers, and after 2 hours it was being reported that due to some technical error, due to some technical abnormality, the mission could not be accomplished as intended, right? So this mission is not successful for time being when I'm recording this lecture. The level of success which we are achieving from this mission has completely been vanished. Now we are hoping that very soon the government of India would formulate some policy, and accordingly these launches would take place. So let's understand what were the details that you need to know for the examination. So EOS-3 की अगर बात करें, EOS-3 is capable of imaging entire country 4 to 5 times a day. इतनी इसकी कैपेसिटी थी जो GSLV रॉकेट के थ्रू लॉन्च हुई थी. And ESO-3 is a part of new generation Earth observation satellite. So first major launch of ISRO for this year, because 18 month और भी खास करके 18 small and foreign satellites भी थे जो were scheduled to be launched, right? And the rocket would be deposited in the satellite जो geosynchronous transferred orbit है उसमें इसको लॉन्च की जाती. The satellite onboard propulsion system जो कि geostationary की almost 36,000 kilometers अर्थ सरफेस के आसपास को रिकॉर्ड करती. So this was something which was very important for country like India, and it would be definitely having a capability to imagine the Earth, the entire country for 4 to 5 times. So that was supposed to be a great achievement, but unfortunately we have missed this. Now advantages of EOS-3 की अगर बात करें, so EOS-3 is meant to have real-time imaging. The large part of country can be used. और इसके जो benefits होते हैं that were for monitoring water bodies, crops, vegetations, frost cover, जो forest cover है उसको लेकर के natural disasters, flood as well as cyclone, right? So these were some of the important advantages that we could have taken from the EOS-3. Now the other news, that is an urban job safety net. This is something which is a very important editorial talking about the job safety in rural and urban areas, and important for your general studies paper 2, welfare schemes for the vulnerable section of population by the center and the states. So what are the issues that I'm going to discuss under this? There are 6 important subtopics. So the first is background, second would be data on poor and unemployment, rural urban livelihood divide, insights from Himachal Pradesh, a case study and an example from Himachal Pradesh, challenges that were there in the plans, executions, and bottom lines. This is the way forward, right? So what is the theme of this editorial? This editorial focuses upon providing the job in rural and urban areas, and the job loss that we have seen during the COVID-19, we need to cope up by providing sufficient job both in the rural as well as in the urban areas. तो कुछ background की अगर बात करें, so during the pandemic we have seen that country has again faced that difficulty, जहाँ पे life को protect करना और livelihood को बचाए रखना was a great challenge for the government. And going by some important forum like World Economic Outlook report, जिसने 2021 में अपने reports दिए, IMF और कुछ important organization ने जो report दिए, उसके मुताबिक China was the only country that has witnessed some growth. उसके अलावा सारे countries की जो growth थी वो minus में गई. So overall global GDP की अगर बात करें, that has shrunk by 3.3%, और इंडिया की जो GDP वो जो shrink हुई है वो 8% के आसपास माइनस ग्रोथ रेट दिखी गई. So the contraction were also seen in some other major economy like US, Brazil, Japan, Canada, European areas that contracted around 3.5 to 7%, right? Depending सबके लिए अलग-अलग figures हैं. And China is the only country जिसने 2.3 plus में growth किया. This is the only country that have seen some growth, right? Now data की अगर बात करें, जो unemployment को लेकर के data है और खास करके वैसे पुअर्स जिनकी रेशियो काफ़ी बड़ी है, तो ये एंटिसिपेट की गई है कि ऑलमोस्ट 95 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो कि इस कोरोना की वजह से, इस पेंडेमिक की वजह से जिनकी जॉब लूज हुई, दैट पीपल हैव अगेन कम इनटू द एक्सट्रीम पुअर कैटेगरी, राइट? अगेन जो पुअर थे वो एक्सट्रीम पुअर हो गए, जो मिडिल क्लास में थे वो कहीं ना कहीं पुअर के कैटेगरीज में मेंशन हो गए. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन यूरोपियन एरिया, यूएस, कनाडा, ये ऑलमोस्ट 7.1, 8.1 और 9.6% है. तीनों कंट्री के लिए अलग अलग परसेंटेज है. रिस्पेक्टिवली ये तीनों कंट्रीज ने इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट डेटा इंक्रीज पाए.
Now, talking about the country like Spain, Greece, Turkey, Philippines, Argentina, Brazil, Colombia, and Peru, the other countries are grappling with the unemployment with a double-digit rates. इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट को मॉनिटर की जाती है दैट इज़ बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी. उन्होंने एस्टिमेट किया है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो इंडिया में है दैट इज पिक्ड अप अराउंड 23.5% इन अप्रैल 2020 and before falling to 6.9% in February 2021. And sometime it was so high that we have seen 45% were the unemployment rate. Now, रूरल अर्बन डिवाइड की अगर बात करें, जिस तरह से जो डिस्पैरिटी है उसको समझने की ज़रूरत है. सो इन द वेक ऑफ economic deceleration, it is time that we need to minimize the livelihood loss. Whatever livelihood loss that has took place in rural and urban areas, we need to overcome that, right? तो गवर्नमेंट ने कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स अपनाए हैं जो कि एक्सपर्टिस के ओपिनियन में नहीं है. तो कुछ सेक्टर वाइज व्यू हमें देखने की जरूरत है. गवर्नमेंट ने जो ट्रेडिशनल अप्रोचेस लिए हैं उसमें रूरल और अर्बन के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं. अगर बात करें फर्स्ट that there is an economic shock and it is essential to provide people with formal access and livelihood safety nets, right? So this is the time people who have actually lost their job need some sort of surety from the government so that they can earn and they can invest, right? People do not have money. Now second, livelihood safety must be a comprehensive coverage. A comprehensive coverage होनी चाहिए, sustainable होनी चाहिए so that people can continue working. And such net can also be provided by Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. But इसमें सबसे बड़ी विडंबना ये है कि गवर्नमेंट ने इसके भी बजट को रिड्यूस कर दिया है, राइट? सो गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिड्यूस द मनरेगा बजट. ऑल्दो वी हैव सीन कि जो मनरेगा में एलोकेशन है, मनरेगा की जो रिक्वायरमेंट है, जो लोगों की इनरोलमेंट है मनरेगा में, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है. सो लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनरेगा में इनरोल कर रहे हैं. सो अर्बन इंडिया डज नॉट हैव सच क्वेश्चन. ये तो रूरल इंडिया की बात हुई जहाँ पे एक ऑप्शन है, बट अर्बन इंडिया में क्या है? अर्बन इंडिया में क्या क्वेश्चन है? लोगों के पास बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, राइट? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगी कि गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि जो स्किलिंग है उस पर ध्यान दी जाए, ताकि जो अर्बन एरिया में जो लोग हैं, अर्बन एरिया में लोग मनरेगा पे काम नहीं करेंगे. दे नीड सम स्किलिंग सो दैट दे कैन कंटिन्यू देयर लाइवलीहुड. सो स्किलिंग पे भी ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है. Now, insights from Himachal Pradesh. This is something which would be again helping you in your case studies paper, general studies paper 4 case studies में भी आप इस तरह के एग्जाम्पल नोट कर सकते हैं. So, a few example of the wage employment. तो जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की, स्टेट गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, दैट इज कॉल्ड मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, राइट? और लास्ट ईयर इसको लॉन्च की गई, जहाँ पे लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात की गई फॉर 120 डेज, राइट? एंड दिस इज अ गारंटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट. अगर ये उनको बेनिफिशियरीज को नहीं मिलती है विद इन 7 days ऑफ देयर एप्लीकेशन, सो 75 रुपीज़ पर डे उनको कंपनसेट करना होगा गवर्नमेंट को, राइट? सो दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बहुत ज़्यादा जो रियल टाइम इम्पैक्ट है ग्राउंड में वो दिखे, और बहुत सारे लोगों को इसके वजह से जॉब्स मिली. सो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं. सो इनिशियली व्हेन द स्कीम वाज कंसीव्ड, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से स्केप्टिज्म हो रही थी इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में. बट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो उनको यूएलबी है, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ में जो उनको फंड मिलते हैं स्टेट कमीशन और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से, वो इस फंड को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे अंडर द मुख्यमंत्री आजीविका योजना, राइट? एंड इन दिस ईयर ऑपरेशनल जो $250,000 में काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयड मिली. ऑलमोस्ट 3% ऑफ द टोटल अर्बन हाउस होल्ड इन हिमाचल प्रदेश हैव गॉट देयर जॉब एंड दे हैव जनरेटेड द जॉब, राइट? एंड इफ द स्कोप ऑफ मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना इज ब्रॉट इन, इट कैन इंक्लूड मस्टर्ड रोल बेस्ड वर्क, जो वहाँ की रीजनल वर्क्स हैं, municipal services. It could enhance the livelihood and opportunities. So depending upon the requirement of the work, government could allocate people to do some work, and accordingly they can remunerate them with sufficient amount that is required. Now some bottom line, अगर हिमाचल प्रदेश की एक्सपीरियंस को देखें तो कुछ क्रूशियल इंसाइट्स हमें मिलती हैं. फर्स्ट कि जो अर्बन एरिया स्कीम्स हैं उसमें काम करने की ज़रूरत है. जो फिजिकल स्पेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नो यूनियन एंड द स्टेट कैन प्रोवाइड रिसोर्सेज टुगेदर, राइट? इफ यू कैन वर्क टुगेदर इन अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैनर, definitely we can come up with the challenges that country is facing. The second is minimum wage for the rural and urban areas.
because the wage that is provided for rural area cannot be sufficient for the wage that is provided to the urban areas. तो दोनों जगह की जो महंगाई है उसको देखते हुए काम करने की जरूरत है, and we have to make sure कि people from rural area, if they don't want, unnecessarily they should not be migrated to urban areas for their work, right? That create a lot more problem. They have to leave their home, they have to leave their family, and they have to earn single living, right? So there third is there must be a asset creation for services of delivery. So delivery services का मतलब not only the food delivery or any other delivery, we need to create a holistic बेसिकली वर्क फोर्स जो कि स्किल्ड हो, और वो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो या रूरल एरियाज में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन को दे पाए. एंड द फोकस शुड नॉट बी ऑन इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ म्यूनिसिपल सर्विसेज. जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है हर एक एरिया में, दैट नीड टू स्ट्रेंथन. बाय म्यूनिसिपल सर्विसेज आई मीन द हॉस्पिटल शुड बी ऑल्सो गुड, the road safety should be also good, there should be complete hygiene that need to maintain so that there is no health problem that particular district or city is facing, right? So we have to plan accordingly. Government need to come up with a holistic plan so that a job should also be provided, and at the same time जो civil amenities है वो भी citizen को मिल पाए, right? So this is how, if you are writing, suppose if you are writing an answer, you have to conclude your answer in this way, right? Now coming to the MCQ questions of the day, before I proceed with the question, just to tell you the answers of yesterday questions. For the first question, the correct option is C. For the second question also, the correct option here is C. So today's question, Maitri Setu project. Maitri Setu symbolizes the bilateral relationship and friendly ties between India and Sri Lanka. The project is being taken up by the Land Port Authority of India. So what you have to do, you have to choose the correct option and write that in the comment section down below. Second, the joint military exercise Dustlik 2 is between which among the following countries? So you have to just name the countries, that India, Sri Lanka, India, Japan, and Russia, India, Afghanistan, and India, Uzbekistan. So what you can do, you can write your answer in the comment section. And I will just request all this people out there who is listening to this lecture, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, आंसर्स लिखिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल्स है. जो रिकॉल पावर है इससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है आपके लिए, राइट? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आप अगर आंसर नहीं भी जानते हैं, मेक अ इंटेलिजेंस गेस, राइट? अगर आपकी वो आंसर मैं आपको नेक्स्ट डे जो बताता हूँ करेक्ट होती है, वेल एंड गुड, नहीं तो बाद में आप उस क्वेश्चन को डिटेल में रिवाइज कर सकते हैं. सो मेक श्योर यू आर पार्टिसिपेटिंग एंड मेकिंग योर सेल्फ, जो लर्निंग की प्रोसेस उस साइकिल को आप बरकरार रखें, राइट? So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, you can let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Thank you so much for listening.